मैंने ऐसा सच कोई नोट्स बनाया नहीं है। No, I mean this PPT. यू वांट पीपीटी? ओके, ओके, आई विल शेयर द पीपीटी। जैसे एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, आई विल शेयर द पीपीटी। ओके, it will take at least 2-3 lectures more to complete this module. Then I'll share the PPT. Ma'am, actually we revise every day, so we need PPT. अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो एग्जाम में पूछेंगे। ये हो सकता है कि मैक मॉडल पूछ सकते हैं, मैक फिट्स मॉडल एंड एक्टिवेशन फंक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बस ये तीन इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो आई विल शेयर इट, क्योंकि वो एक ही पीपीटी में हो जाएगा आपका। आधा आधा शेयर करूंगी तो वो नहीं होगा। So at the end of each module, I'll share. Till then, you can go through whatever available online and book. If the PDF is available, आपने अगर कॉलेज से बुक ली होगी दीपा एंड शिवानंदन की, it is containing everything, all the syllabus of artificial neural network. तो आप वो बुक इश्यू कर सकते हो कॉलेज में आके, and you can read through it. It is good book recommended for artificial neural network. Okay, I'll tell you something about history of artificial neural network कि किसने first neuron develop किया था. The first one layer which is developed by Rosenwald and the original perceptron. Now, what is a perceptron? It's generally a neural model जो मैंने कल बताया था। एक input आता है, then there is weights are added to it. And then it is given to the function, activation function. Summation होने के बाद activation function के through it will give the output. So the first perceptron model was developed by Rosenwald, and it is containing only one layer. ठीक है? And then he developed in 1960. Then the second one is 1974. Verbos is scientist which came to introduce the back propagation algorithm. So we'll see what is back propagation algorithm, and it is a very important algorithm. Why we need a back propagation algorithm is generally used to reduce the error which is from input to output. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बैक प्रोपोगेशन में जो पीछे पीछे न्यूरॉन में जाके ऑल दोस लेयर वी करेक्ट दैट पर्टिकुलर एरर, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज बैक प्रोपोगेशन। हम लोग पीछे जाके उसको एरर करेक्ट करते हैं। देन इन 1986 द machine learning is being introduced by Rumel Hurt. And 1982, Hopfield introduced the neural network. Then a new version of Hopfield network has been developed by a Boltzmann machine, which introduced the Hopfield network and the MLP version. And in 1988, again, some layers were introduced in the neural network with the method name as potential function. Then again, some other things were introduced. So this, so yesterday I told what is difference between that computer and a neural network. So in computer, it consists of only CPU, but in neural network, you can have a parallel processing. In computer, it is a fast processing unit. In neural network, it is slow processing unit, because आप जैसे जैसे number of neurons या number of layers increase करते हो, आपकी processing slow होगी. Then the computer are reliable unit
neural network are unreliable unit. Now, why this is a reliable unit? Because if you say to the computer to perform a particular task, it will perform that, and probable errors or after compilation, there can be a errors or it will produce a result. So it gives some reliable output. But in case of neural network, why it is known as unreliable? Because if we consider a particular neuron, and by using some activation function and by using some algorithm to process the output, the efficiency of that particular neuron is not 100%. There are few algorithm which create some 80 to 90% आपको accuracy मिल सकती है. So they are unreliable. Suppose you give a data set of fruits, कि एक एप्पल को recognize करेगा, एक suppose there is a banana. तो it may sometime give the output कि एप्पल को वो बनाना predict करे. So the prediction model is not 100% accurate. That's why it's known as a unreliable unit. Then static infrastructure में जहाँ है वही सेम इंफ्रा में वो रहता है, यहाँ वहाँ वो भागता नहीं है. Dynamic infrastructure means a robot is there. So in that case, it can run, it can catch, it can pick up some things. So computer is a static. It works on the same machine, or it works on the same platform. So why artificial neural network? Yesterday I've told you, because there are basic two reasons. One is technical reason, that some problems such as character recognition or prediction of future, and because of this, the system require a parallel and adaptive processing. So that's why parallel processing के लिए we required a neural network. ठीक है. एंड बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट से अगर मुझे देखना है, देन ANN कैन बी यूज्ड टू रेप्लिकेट एंड सिमुलेट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन. रेप्लिकेट एंड सिमुलेट सम ऑफ द कंपोनेंट. ये पूरा ह्यूमन की तरह नहीं काम करेगा. इट कैन रेप्लिकेट और इट विल सिमुलेट सम ऑफ द ऑपरेशन of a human kind of brain or animal, thereby giving an insight into a natural information process. So natural NLP आपने सुना होगा, natural language processing and all those things. कि अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, सपोज आई स्पीक फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, तो देन इट कैन प्रिडिक्ट कि हिंदी में उसका मतलब क्या होने वाला है. सो दिस इज नोन एज natural language processing. Sorry. Then the building blocks of ANN. So there are different nodes available, which is basically known as units, and each neuron consists of input, activation function, sorry, just a minute. सो आपने जो कल वाली एक्टिवेशन सॉरी न्यूरल नेटवर्क का जो मॉडल देखा था, उसमें क्या था कि there was one input like x1, x2 and xm, which was multiplied with the weights, and then it goes directly to the activation function, right?
And then there is one thing, that is one output signal is there, which is connected to other neuron. ठीक है, आपने एक neuron का model देखा, then it is connected to the other neuron, so the output of one neuron is given to the output of the other neuron. So we have also seen this. It is connected to biological system. Mein, it is connected to around 10 raised to power 11 other neurons. So this is a part of our brain, and this is a part of a ANN, artificial neural network. तो मैंने कल ब्रेन वाला स्ट्रक्चर देखा था. So this was the structure of your brain, which is connecting from one dendrite to another. It is known as axon. Okay, dendrite is what? ये वाला जो structure है. This wire-like structure is known as a dendrite. And internal body, that is your input or जहाँ पे function होते हैं, operation होते हैं, that is known as cell body or soma. And middle one is the nucleus. Then synapses is it will transfer the electrical current from one dendrite to the other dendrite. Okay, an axon is the connection between the input body or a cell body. Okay, so how do ANN works? Now, this diagram you already know कि x0 is multiplied with w0, and what is y0? Y0 is the multiplication of this, and the summation or the processing element क्या है? It will sum all these weights, that is weights and its input. It is summation of yi. So yi is what? Y0 plus y1 plus yn. And what is y0? Y0 is equals to w0 into x0. And after it produces some s processing element, it is given to the activation function and then the output. Okay, so this diagram we have already seen, x1 into w1, it is given to the summation unit, then some transfer function or activation function is given, and then output is filled. So this type of model is also known as Mac-Fuller-Pitts model. Okay, so the first ANN model is given by Mac-Fuller, and that's why this model is also known as Mac-Fuller-Pitts model. See here what is happening, summation of x1, x2, and xm, and then there is some activation function and the output. Okay, so activation function is given by f of vk. So you can use any of the activation function based on your algorithm, based on the requirement कि आपको output में क्या चाहिए. See here, अब ये input है, it is given to some hidden layer. This is known as a hidden layer, जहाँ पे और एक न्यूरॉन या मैकुलर मॉडल available है. So this is known as hidden layer. So there are multiple hidden layers between the input and output फंक्शन. सो जो बीच के जो भी लेयर्स होते हैं उसको हम हिडन लेयर्स बोलते हैं. इट इज नॉट नोन टू द प्रोग्रामर और so whatever layers is between input and output is known as the hidden layer. Now why it is known as hidden layer? Because whatever the algorithm the programmer gives and the output given by this the hidden layer will be added to the another hidden layer.
and uska output will be given to some other hidden layer. So this hidden layer does all those things that I have told you in this macular model, and then the output is given to this. So this output is generally hidden from the programmer. ये प्रोग्रामर को नहीं पता. That's why some back propagation algorithm and all those things are required. So कहाँ पे error हो रहा है, we can find it out. So now we'll see what are the different activation functions. So these are the different activation function. It is also called as squashing function as it limits the amplitude of output of the neuron. Now suppose I want to use a linear activation function. A linear activation function is what? If I have input A, it will produces an output A only. ठीक है? तो इसका suppose A is equals to Fn, that will create a output as N only. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. So if I give its input as 1, output will be 1 only. Now why we required an activation function? What is an activation function? So activation function is a function that is added into artificial neural network. Why it is added into artificial neural network? To help network learns complex pattern. कॉम्प्लेक्स पैटर्न मतलब क्या? वो ऑटोमेटिकली अपने आप खुद को ट्रेन करेगा कि सपोज द शेप ऑफ एन एप्पल इज समवॉट सर्कल or the color of apple is red sometime. So it will train and it will fit in that particular model कि अगर उसका shape round, somewhat round and somewhat the color of that apple is red, in that case it will produces apple कि अगर input में ये shape दिख रहा है and the color is red, it will create the output or it will predict the output that the given input is an apple. ठीक है? So to network to learn by its own complex pattern in that data, the activation function is given. So when comparing with the neural based model, that is our brain, the activation function is deciding that what next is to be fired to the न्यूरॉन. ठीक है? उसके बाद फर्स्ट न्यूरॉन क्या करेगा कि उसका आउटपुट सपोज एप्पल है, then the output of that particular first neuron is given to the second neuron, and what this activation function will do, it will decide ki whether that particular learned from that particular neuron, it will be available or it will be extracted to the next न्यूरॉन. अब नेक्स्ट न्यूरॉन के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है कि एप्पल स्वीट होता है. ठीक है? एप्पल क्या होता है? स्वीट होता है, सार नहीं होता है. तो दैट न्यूरॉन विल अगेन ऐड टू दैट पर्टिकुलर मॉडल कि पहले क्या हुआ, रेड एंड द शेप ऑफ एप्पल इज राउंड. दैट इंफॉर्मेशन इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन कि राउंड भी शेप है एंड उसका कलर भी रेड है.
Then the again next information which is available to the second neuron कि apple के पास sweet taste होता है. So that taste is also added to the data set of apple. Ki apple has a sweet taste. Apple color is red. Apple is somewhat round. So these three information is available to the second neuron also. Then after that all this information collect होने के बाद हाँ ये इनपुट है उसका स्वीट टेस्ट भी है रेड कलर भी है राउंड कलर सॉरी राउंड फिगर भी है then all these three information will be carried forward to the third function sorry third neuron. अब थर्ड न्यूरॉन के पास कुछ और इनपुट होगा कुछ और इंफॉर्मेशन होगा तो दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय द एक्टिवेशन फंक्शन कि all these things will be symbolizes to that particular input or to that particular data set given. So this is exactly what the activation function does. It takes an output signal from the previous cell and it converts in some other form. So it can be taken as input to the next cell. Okay. Have you understood what is an activation function? It is or it helps the network to learn the complex pattern and it also decide what needs to be fired to the next neuron and the output of the first neuron or the previous cell it converts it and it takes the input to the next neuron. Okay, so there are different activation functions are available. The first one is the linear activation function. That is, whatever is the input, you will get the output. The second one is the threshold one. That is, if you set a threshold, suppose it is either 0 or 1. ठीक है थ्रेशोल्ड मतलब क्या है सिर्फ दो ही चीज होते हैं आइदर इट इज जीरो जीरो मतलब नो या फिर वन मतलब यस सो इफ आपने ये एक्टिवेशन फंक्शन दे दिया कि आइदर इट विल बी 0 और 1 बीच में का कुछ नहीं होगा कि वो आइदर एप्पल है तो एप्पल के कैटेगरी में जाएगा आइदर बनाना है तो बनाना के कैटेगरी में जाएगा ठीक है इफ यू से 0 इज फॉर एप्पल 1 इज फॉर बनाना देन वो कहीं देखेगा नहीं अगर उसका प्रिडिक्शन करीब करीब 0 आ गया दैट इज 0.4 0.3 0.2 then it will categorize to apple अगर वो 0.5 से ऊपर आता है आपने ये थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि अगर 0.5 के ऊपर उसका प्रेडिक्शन आ गया then it will be category into the banana. Have you understood what is threshold? Threshold means either it will be 0 or 1, either it will be yes or no. If you give a data set of a boy or a girl, then either the whatever the feature the neuron is being trained to, that features will be compared to the boy data set. तो it suppose boy आपने 0 के लिए प्रेडिक्ट किया कि अगर 0.5 तक थ्रेशोल्ड आता है तो it will be considered as boy. If it is greater than 0.5, it will be considered as a girl. So this is known as threshold activation function. अगर आपके requirement में ऐसा है कि it is either 0 or 1, then you can use this threshold activation function. Then comes the sigmoid activation function. ठीक है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के कैटेगरी में कौन है
only the linear one, that is a equals to f of n. And with this threshold, sigmoid, all these things, activation function is known as non-linear activation function. You can see by their graph why it is known as non-linear. Now, the next one is the sigmoid function. The sigmoid function का इक्वेशन क्या है? It is equal to 1/1 plus e raised to power minus n or minus t, whatever. So in this sigmoid function, if you fit the value of t, or if you change the value of n, e raised to power minus n, so you will get such type of graph. Okay, it's an exponential function, but it's going through this one. Okay, it is cutting this from 0 to positive n. So this is a positive sigmoid function. A equals to 1/1 plus e raised to power minus n. So ये याद रखना, whenever you give or you change this value of n, the function will goes on increasing like a exponential function. So why we required a sigmoid function? The sigmoid is a non-linear activation function. So it is generally used for gradient descent problem जहाँ पे होता है. So आपको नहीं पता कि what is gradient descent problem. We'll see what is this problem. जहाँ पे gradient descent problem होता है, इसके लिए we use a sigmoid. And if you want the output to be not centered at zero, और आपको नॉन जीरो आउटपुट चाहिए, उस टाइप पे यू कैन यूज सिग्मोइड फंक्शन. और wherever there is a binary classification problem, you can use a sigmoid function. Binary classification problem मतलब either 0 और 1. ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको उस बाइनरी क्लासिफिकेशन में जाना है, either yes or no, you can also use the sigmoid function. Then in this sigmoid function, okay, there are other, sorry, the sigmoid is categorized into another two function. Sigmoid में और दो functions होते हैं. I'll tell you. सॉफ्ट मैक्स फंक्शन भी होता है, एंड एक 10h करके भी फंक्शन होता है. सो द सॉफ्ट मैक्स फंक्शन दैट इज अवेलेबल व्हेन इट प्रोड्यूसेस द वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 1. ठीक है, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 1, बट इस रेंज में अगर वैल्यू आता है 0.1, 0.2, 0 टिल 0.9, then you use a softmax function when the your requirement is in the range of 0 and 1. Okay, range में अगर आपका 0 and 1 के range में अगर आपका requirement है, you can use a softmax function, and it is similar to sigmoid function only. But this is generally used in the final layer of the classification model. Okay, where it is used in the final layer of the classification model. हमारे पास क्या है, सपोज एक ही मॉडल में एक ही न्यूरॉन है या एक ही हिडन लेयर है, then either use sigmoid function or either use softmax function. But ऐसा मॉडल अभी तो एग्जिस्ट में नहीं है कि there is only one single hidden layer. There are many layers available. लेकिन जब भी आपको softmax function यूज करना है, then use it at the final layer for the classification. Okay, so it will give you the range ki whether that particular data or whether that particular input is in the range of 0 and 1.
अगर मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि एप्पल इज इन द रेंज ऑफ 0 to 0.5 एंड 0.5 के ऊपर इज बनाना, देन विद इन दिस रेंज अगर 0.25 आ गया 0. So it is similar to your sigmoid or threshold function. So it will predict whether it is apple or banana. Then again similar to this is a tan h function भी होता है इसमें. So tan h is generally it's comparable to sigmoid. अगर आपको जीरो सेंटर्ड दिखाना है, जीरो सेंटर्ड, then there is ReLU function also. Wait, I'll show you how the graph look like. Tan h and ReLU function का. Okay, can you see this? These are the various non-linear activation function. उसमें वो पीपीटी में ये वाले ग्राफ नहीं है. You can see here, this is a sigmoid function which is not touching the zero value. ठीक है, अगर आपके इसमें requirement है कि you do not need a zero value, this is a S type of curve it is having. That's why it's known as sigmoid function. So such type of graph आपके इसमें चाहिए होगा कि it should start from some negative value and then increasing to some positive value, and between it's between minus infinity and towards 1. So if you want such type of graph where sine of t is equals to 1 upon 1 plus e raised to power minus t, and if you vary the value of t, it will look like this. Then the tan h वाला, यहाँ पे क्या है, ये भी S टाइप का कर्व है, but it is passing through the origin. It is compared to the sigmoid function. Then there is a ReLU function. ठीक है, रेलू फंक्शन में क्या डिफाइन किया है, इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0, ठीक है. इफ यू वांट टू फाइंड द रेलू फंक्शन, जनरली अभी सभी जगह पर रेलू फंक्शन, सॉफ्टमैक्स फंक्शन ये यूज करते हैं. तो रेलू फंक्शन मतलब क्या, कि अगर आपको मैक्सिमम वॉट एवर द वैल्यू इज प्रेजेंट, यहाँ पे इस कर्व में इसका मैक्स फाइंड आउट करना है, देन यू कैन यूज अ रेलू फंक्शन. ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, then it goes towards the x. So f of x is what? Max of 0, x. ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा कि इस लाइन में
कौन सी है, then you can use a relu function. Now this type of generally is used कि अगर आपको एक threshold वाला problem है कि मुझे ये लाइन के इधर पे जो भी डेटा मिलेगा इस अपर साइड towards the positive side, इस केस में ये रीजन में, then it will be identified as a एप्पल. एंड अगर यहाँ पे जो भी डेटा मिलेगा then it will be identified as a banana towards the lower side of the ReLU function. That's why this ReLU function is given. ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपके ये डेटा पॉइंट्स ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, एक डेटा पॉइंट ऐसे ऐसे इधर दिखाई देते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड आउट अगर आपने ये लाइन ड्रॉ किया है इन दोनों डेटा सेट में, सो हुएवर और दैट algorithm is known as KNN algorithm, that is K nearest neighbor. तो इसके पास में जो भी अवेलेबल डेटा सेट है दैट आर ट्रू, और जो दूर वाले जो डेटा सेट है दैट इज हैविंग सम एरर्स. तो तो ये जो दूर वाले जो फार वाले डेटा है उसको पास में कैसे ला सकते हैं, दैट केएनएन एल्गोरिदम विल टेल यू. तो हम लोग वो एल्गोरिदम भी करेंगे. आप ये सब ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. दिस इज नोन एज लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन. दिस इज सिमिलर, बट ये क्या हो रहा है, ये इसमें रेलू फंक्शन में एंड लीकी रेलू फंक्शन में एक ही डिफरेंस है. इट इज क्रॉसिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. या रेलू में क्या है, इट इज जीरो ही रहता है एंड देन इट स्टार्ट फर्दर इंक्रीजिंग, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव साइड, इट क्रॉसेस जीरो वैल्यू. Okay, so we can find out maximum of x value. Is known as leaky because it is going down towards the negative side. ठीक है. सो ऑल दीज एक्टिवेशन आर फंक्शन आर अवेलेबल. तो आपको हर एक चीज अगर मॉडल कुछ बनाना है, आपको अपना खुद का जब मॉडल बनाना है, कुछ प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है, तो ये सब एक्टिवेशन फंक्शन आपको सोच समझ के लगाना पड़ता है कि अगर मैंने थ्रेशोल्डिंग लगाया तो मेरे डेटा में कितना एरर आता है, सॉरी मेरे मॉडल में कितना एरर आता है. देन इफ यू यूज अ रेलू फंक्शन कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है. सो दिस इज यू नीड टू डू अ ट्रायल एंड एरर. सोच समझ के लगाओ कि मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए. अगर सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन है yes or no, then use either threshold or sigmoid. If your classification model is based on some कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, then you can use the railing function. ओके. इसमें किसी को डाउट है एक्टिवेशन फंक्शन में? No, ma'am.
Sorry, rule number one, two, three, Yes, ma'am. four, Present, ma'am. five, Yes, ma'am. six, Yes, ma'am. seven, eight,